Namaste to all of you and a very warm welcome to today's Chiranjeev Gurukul Sammelan. For those of you who are new to Chiranjeev Gurukul, CG is a learning platform where we aim to create leaders to transform this world using the power of Bharatiya Shastra or Indian wisdom. Chiranjeev Gurukul Sammelan is an initiative by the CG community to inspire, inform, and grow. The purpose of Sammelan is to bring forth the contemporary value of eternal Indian wisdom through interactive and engaging learning sessions that open our eyes to the applications of Indian wisdom to our lives. Today, we have gathered together for our 8th Chiranjeev Gurukul Sammelan, an insightful workshop on the art and science of storytelling with insights from Bhaarat. But before we begin, let us begin with our invocation. So I would request all of you to close your eyes and take a grounding breath. Take a deep breath in and a deep breath out. We will chant Om thrice and continue with our invocation. Om. 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 Om Sahana Vavatu Sahano Bhunantu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadidamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Namaste, everyone, and welcome. It is so great to see so many of you here with us today. So, as you may all know, Rajesh Kamath is also the co-founder of Chiranjeev Gurukul. And on any other day, he would be here to set the context and welcome you warmly to today's session. But unfortunately, he's traveling, so he couldn't be with us today. So I'll share a short clip of him sharing his wishes with us. Namaste everyone. I'm sure you're going to enjoy this session tremendously by Bharat and Gitanjali. Since I cannot be there, I want to at least tell you what is the meaning of insights from Bharat. So you will of course get several from the stories themselves, but I want to tell you at least 4 differences and many more that you have to figure once the stories are told. First is that every single story is a container for several messages and a window to many worlds. So you need to think what they are. You really need to go deeper. That's number 1. Number 2, they are multi-layered. No story has lesson at only one single layer. You need to go deeper and deeper. So there's something which may be obvious, something that is at the next level, and then you may go several levels deeper to finally discover what the essence is, and it will blow your mind. Number 2. Number 3 is that intentionally some of the characters are made controversial. You may have found them as heroes in some and they become villainous in another. It is intentional so you can judge lesser and think more.
Last but not the least, each of these stories have many rasas. They will evoke several emotions in you. They are for you to enjoy and dwell. So I hope you will think about these when you listen to these stories. Dhanyawad for now. Enjoy. So, with that, I would like to welcome our co facilitators for today, Bharat, Dash, and Gitanjali. Namaste and welcome. Namaste. Namaste. So, Bharat and Gitanjali are one of our very early on members from the Chiranjeev Gurukul Community. Both of them come with their plethora of experience. Bharat is probably a guru when it comes to anything when it comes to storytelling. And of course, his area of expertise is in the Niti Shastra. Also, formally, HR professional is also a very keen learner and I would like to say practitioner of the Bharatiya Shastras, and she continues to learn with us. And she is also the founder of Kathashala, where she imparts Indian wisdom to children through the power of stories. So we could not find two better facilitators for today's session than Bharat and Gitanjali. So welcome to you both. And now I'll hand over to you, Bharat, to get us started, please. Namaste, everyone. Thank you so much, Aditi. First of all, thank you, Rajesh, Amita, for taking this initiative. Aditi, Gitanjali, Meenakshi, and everyone who was a part of arranging this, and not just this event, but also Sammelan in general. So, I am no expert when it comes to stories or storytelling. This I am maybe as fascinated by maybe more fascinated by stories than most of us, or maybe as fascinated with stories as all of us. So there is something in story which keeps us hooked, keeps us alive, keeps us curious, and maybe even after looking at the entire poster or the link that was shared for registration, out of everything that was available on that poster, the one word which would have caught our attention and made us reach here would have been story. It was not my name, not Gitanjali's name, nothing, no art, no science. The one word which made us reach here is story. So it has got something. And of late, there have been a lot of talks about the power of stories, how stories can be used, how narrative are used across domain, how from brand building to political marketing everywhere, and the power of narrative, and it's all about narrative. Thing is, uh, it's because of the technology or the reach of technology, the power of stories has grown multifold. And but if we look at our history, our past, not just from Bharat but also beyond, stories have always been an integral part of all the culture, all the societies, and have directly or indirectly influenced or shaped the civilization since ages. Uh, can we just go on? Okay, yeah, thank you. Now, coming to the first part of this discussion is about the power of stories. What can a story do in our day-to-day life, or in general, how stories have been used over generations to motivate mankind towards achieving something or towards fulfilling certain goals within a small organization or a large organization. But before even we go to stories as such, let's hear an incident which happened in 2009. Now listen to this carefully, just to give you an idea of how this happened. So, 2009, there was this journalist whose name was Rob Walker. Now, Rob Walker was doing an experiment. He was doing research and an experiment about understanding the power of story. So his idea was very simple. His objective was very simple, that is storytelling really the most powerful tool of all time? It was a statement, okay?
is storytelling really the most powerful tool of all time? Now, Rob Walker wanted to carry out an empirical research on how stories can influence a certain behavior, what all it can stories can do. So what he did is he went to eBay and he purchased around 1200 small items, more like mementos or souvenirs, small articles, not costing not much than $1 each. So 200 items costing not much than $1 each. Overall, for all those 200 items, he spent $129. So 200 items bought on eBay at $129. What he did next was very interesting. He hired 200 storytellers. Okay, so he just sent a message on different online platforms saying that I need freelancers, 200 different storytellers, so that the story is unique. For each of the article that he bought, he asked the authors or the storytellers to write a brief story describing or keeping the object at the center. So all the 200 writers, there is some disturbance. Okay, thank you. All the 200 writers or the storytellers, they wrote 200 different stories for each of the items. Rob Walker again went to eBay. The same item which he purchased for $129, including all of them for all the 200 items, he again no, reposted the same items with the story now and for auctioning or for selling those articles. 129 was the cost price. Any idea for how much is sold each of the items? Nothing. He just added a story to each of the items. The data shows, his experiment shows, roughly, he sold all of them at $8,000. All of them combined together. 129 cost price, $8,000 was the selling price of all of them. One of them was a horse head, which he bought for around 90 cents. And it got sold for around $62.95. A whooping 6,300% return. What he did, of course, we don't have to decide whether his experiment was a failure or a success, but what this shows is just a simple story behind an object, an absolutely meaningless object can create emotions, can propel certain actions, a person to perform certain actions which may look absolutely absurd, but then that story has that power to do it. And if we say that we are very smart, we would have never bought any such article. We know the cost price that this goes for $1. Why should I buy it for $62, or why should I pay $50? The thing is, next time we purchase anything or we decide to buy anything, we just need to take a pause and ask ourselves why I am buying this. Could be a story running in our mind. The story which may have been planted by the advertising guys or the brand building guys, or we must have lived that story, or that story must have been inside our mind for a long period of time. So it is a story. We always love to say that we are rational thinkers, we are logical thinkers, we decide logically or rationally. The answer is there is always an emotional element and so-called illogical, irrational behavior, and behind every so-called irrational, illogical behavior, there has to be a story which is running in our mind, which we want to make sure that it is true, and we are afraid to deviate from that story which is running in our mind. Okay, so with that note, let's just go through some of the technicalities which we feel uh, are a part of a story. So what exactly is a story? तो कहानी कहानी है, सब कहते हैं, हम कहते हैं, सब शेयर करते हैं, सच है, झूठ है, बट
can we define it in a certain way? Can we, in a very simplified way, can we define what exactly is a story? So for that, we need to understand the process of communication. Now, communication, we all know, is an integral part of human need, human nature, not just human, but also beyond. So we all need to communicate for one reason or the other. So in communication, there are two main elements or entities involved. There is a sender, there is a receiver. The sender wants to send something. He or she has an idea in his or her mind, which he or she expects to be transferred to the other person's mind exactly in the manner in which it is there in his or her mind. We want it to get kind of copied in the other person's mind exactly the way. This is always the intention. And we all know that it never happens exactly the way the sender wants it. So there are certain problem areas, or there are certain things in between the sender and the receiver which kind of uh, act against this efficient communication expectation. They are barriers. Now, barriers are things that oppose or restrict the communication process. Barriers, over the period of time, if you look at human history or even today, there are two main kind of barriers. Suppose I want to say something to Gitanjali. So I have an idea or I have something and I want to share it with Gitanjali. Now, first thing I want is that Gitanjali should be in a zone, in an area where she can listen to me, or my signal, as we call it, my signal could reach her ears, could reach her. The first physical barrier. So if my signal itself, the signal that comes from a mouth, is not able to reach Gitanjali, that's a physical barrier. So, but because of technology, more or less we are sorted with respect to physical barrier. So now you are sitting somewhere, some other city, some other country, and I am over here. We are over here. We are communicating. That physical barrier is no longer a barrier, and maybe in the initial days of evolution, it was a big barrier, but later on it got sorted, and with technology, it is almost nil now. But still, it's not just that Gitanjali should be able to get that signal or receive that signal. More importantly, she should be able to interpret that signal, whatever the message has been given. So that is the second barrier, to have a common protocol. So physical barrier and protocol are the two things that restrict proper communication. So common protocol, human beings have mastered this art, and I feel if storytelling or story is the most powerful tool, then obviously one of the greatest invention or principles that human beings have been able to develop is language. So we have made sure that that signal, that physical signal which goes from one point to another, the interpretation of that happens in a similar manner as the sender is sending it. So it should be on a common platform. So physical barrier and common protocol. So common protocol was overcome with the help of language. Now, if you look at communication, and if we can take the analogy from the DBMS or other sciences, why do we need to communicate? So we want to make sure that there are certain things happening in our mind. Objective वही होना, जो मैं सोच रहा हूँ वही सामने वाले केस में जाए. Maybe we could arrive at a common conclusion, or we could achieve a common goal. So इसके लिए we want the communication to happen. Now communication, if it is happening right now for a problem or for a situation which is in the now, then we can say anything. So if I want to say, for example, I want to say switch off your camera or switch on your camera, or please go on mute, or things like that. So in this case, I can say anything. These are facts, these are statements, instructions. These don't have to be packaged in any certain manner, in any uh, fancy manner, because you can just say switch on, switch off. They all make sense. So this is transactional communication, which is happening for a purpose in the now, in the present. Here, we don't require any packaging. But what if
I want to convey a idea, a thought which has happened in the past or which may happen in the future. Here there is no instruction. Here there is not just plain fact, because that thing, that situation does not exist. I need to create it, either recreate it or create it in the mind. So here, in order to have the involvement of the receiver, and in order to put forth the message in a manner which I want it, I need the involvement, because otherwise the involvement will be missing. The involvement will be missing because we are not in the present. We are discussing about something either in the past or the future. So there I need something special, and that special is a story. That special, that special package, that gift that we give is a story, or we call it narration. Now, when we narrate, either it is of the past or of the future. Present में story नहीं चलता है. Present में incidents होते हैं, communication होते हैं, facts होता है. Then we need narration, and hence narration. And we keep saying that a history is nothing but a narrative, and it depends upon who is in power, who will drive the narrative. So same things. That incident has happened. That incident has happened. We are revisiting it, and we are resharing it. So who is resharing it, and for what purpose, will define or will shape the narrative. So that's how stories originate. Is it good, bad? So it all depends upon how well we use it. But one thing is for sure, that stories by far are the most powerful tool ever invented by human, even more powerful than atomic bomb. Atomic bomb can kill few people in the present, can affect few generations later, just few generations. But one story, just one story, powerfully created, well-crafted story, can affect, can destroy bolo positive jo bolo, generations to come. Two civilizations can fight against each other, not for any resources, but just to prove that their story is better or is the correct one as compared to the other one. So stories are that powerful. So how does a story help? When it comes to uh, a teacher or anybody, any teacher, not just in professional schools or colleges, but even in offices or at home. So how does uh, stories help in communication or in sending the message? So it is the best way to engage. I tell you that 10 uh, 10 points for time management, 5 points for customer management or customer relationship. This is plain Jane, just simple statement. This will not stay. Engagement is when the listener is present with his ears, mind, heart, soul completely, and is ready to receive. Not just present there physically and getting some data signals. No, he or she is fully present over there and wants to receive. Now that happens very rarely. But if a story is good and it has been narrated in a right manner, the other person wants to receive. He or she will not be satisfied if the story gets abruptly ended. That curiosity is generated with story. A good storyteller keeps the listener always on the hook and knows कि इसको कहाँ पे रोकना है ताकि उनका engagement level बना रहे. So whether it is a 2-year-old kid, 3-year-old kid, or a 70-year-old person, good story will engage all of them. All of them. So it's the best way to engage. Engagement again means the receiver is ready to receive the message. Helps to visualize. Now we take help of PowerPoint, we take help of multimedia systems to multimedia platforms to showcase or to highlight few things. But ultimately, whether it is a video, whether it is an audio, an animation, a print, a picture, whatever it is, finally, what happens is the image of that gets created on the mind. The final screen
is not the screen of the mobile, is not the screen of the laptop, not the screen of the table or not on television, but the screen of the mind. Wherever you get the input from, it has to get imprinted on the mind for the person to visualize. So if that is the case, do we really need all this multimedia if we can just narrate a story and ask the listener to visualize? Because anyways, the final print is going to be on the mind, inside the mind. So it helps to visualize. Visualization is key for any communication, and especially when it comes to storytelling, or when it comes to narrative, when comes to explaining something, that visualization is very important. A good teacher knows how to make the student visualize. So whenever we think of our ancient gurus, how they used to teach, the image that comes to our mind is a guru sitting under a tree, maybe in an ashram, and the student listening. No screen, no audio visual, plain powerful stories, or maybe the power of visualization which they help. If there is a class of 100 students, I show them a video of, let's say, respiratory system of human being. All 100 of them will visualize it in the same way. I don't like it. As a teacher, I may not like it. But if I tell them, if I narrate them, this happens, this goes through the lungs, from the pulmonary veins, so for different parts of the body. Now, if they are listening to this, and if the teacher is a good storyteller, the lungs come alive. They visualize. They see it in the screen, which is the most important screen, the mind. So they can visualize. And easy to memorize. Ask the students what is the most difficult task of studying, at least in India. The answer is not the subjects or anything. It's about the ability to memorize, and especially before the examination. Now, memorization becomes natural when concepts or communications happen through stories. Again, look at how computer stores memory. So we know that in computer, in the hardware, there are different sectors or different segments in which we place the data and the store. Now, no system will have bulk memory associated for any data. So even if there is a video, or there is a 600 MB video you want to store, it will not be stored in one sector or one segment of the. It will be segregated, and it will be stored in multiple parts. When it is stored in multiple parts, when you are playing it back, there is a pointer which points to the next address, and they know how to take it. So that same thing happens in mind also. Memorization is about knowing after a certain data, which is the next data point, which is the next data point, which is the next data point. That link needs to be connected. If the link is perfectly connected, it forms a pattern. You know that after this happens, this happens. Now, memorization becomes easier if it is told in story, because in stories, the visualizations are in a sequence, in a pattern, and mind always remembers things in pattern, not in fragments. Stories create those patterns in the mind. And so memorization is not a task here. It happens automatically. So I'm sure we would easily remember a story which we have heard when we were 3-year-old or 4-year-old. उसको rehearse करने की जरूरत नहीं, उसको revise करने की जरूरत नहीं. It has been the next point is imprinted. It has been imprinted in our mind so deep that we can still live it anytime we want, and maybe in the same order, in the same sequence, in the same pattern. And that power is there with story. It has a deep imprint. It shapes our personality. The stories help shaping one story somewhere during the course of our life. One story, one character, one incident, and it has changed the way we look at life, or the way we have been living our life. So it has a deep imprint. It goes beyond the mind. So they say, right? Good story is not just listened, it's felt, it's lived. So we live good stories. So we get goosebumps. We are a part of, we cry, we laugh. Rajesh was talking about rasas. So we feel all the rasas when a good story is narrated. It's not just the mind. So yes, the visualization happens in the mind, but
but the engagement is not just of the mind, but the entire body. And when we are present with the entire body, all the cells of it, we feel it. We feel goosebumps when we hear our favorite character from our childhood. उसका नाम ही काफी है, उसका एक छोटा सा स्टिकर या फिर उसका एक फोटो ही काफी है. एक गाना जो उस टाइम पे सुना था, वो स्टोरी जब चल रही थी लाइफ में, जो दिमाग में, वो गाना आज भी हमको वो फील करवाता है. वो याद नहीं आता, वो पूरा फील करवाता है. हम रो पड़ते हैं, हम हंस पड़ते हैं, बिकॉज it is a part of a story which is beyond, which we have lived beyond the mind. So these are few things that a story can help. Now coming to the power of stories. See, anything which is powerful, it can be used both ways, constructively, destructively, and same is the case with stories also. So the topic about whether it is powerful, whether it is ethically correct or unethically, is a topic, is a discussion we can have for some later day. But today we'll just understand, let's just go through what a story can do, the power, and maybe we haven't realized this. In our day-to-day life, we come across so many stories, we live so many stories, that we rarely get a chance to sit back and see the power of the stories and how the stories are actually driving our life. It's not anything else. It's not money. Maybe it's just a story about money which is driving our life. So the power of a story, it can transport one through space and time. So scientists have been trying hard to have space travel or time travel. And but what do you do when you travel? So yes, suppose that you are from here, you are going to some other place. Let's say you are going to Mars, you are moving over there. What is the meaning of travel? What do? You go there and you see things, you visualize things. बट अगर घर बैठे बैठे एक अच्छी कहानी, एक अच्छे नरेशन के थ्रू कोई आपको मार्स में पहुंचा दे, कोई आपको सैटर्न के रिंग पे रोलिंग स्केट करने के लिए विजुअलाइज करवा दे, यू कैन विजुअलाइज, नहीं? So can transport one through space and time, so you can easily move to space. So you are right now, you are here, you want to visualize about your native place or some other city, you can do. Somebody tells you the story कि अभी अभी वहां पे ऐसा चल रहा है, you are transported to some other space and time also. तो आज बैठे हम एक महाभारत का एग्जांपल लेंगे. जस्ट यू डोंट, मे बी बी आर चोपड़ा's महाभारत, others महाभारत have helped us to visualize few people with मुकुट and all, बट वो आप खुद विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि हाँ अर्जुन ने ऐसा किया था, कृष्ण ने ऐसा किया. whether it is that faith or even in future में ऐसा होगा, it's not that difficult to get transported in space and time. And that's maybe one of the reasons why stories are there. Future, past can be explained, can be narrated, can be visualized with the help of the story. So can transport through space and time. It lives beyond the character. Character मर जाते हैं, उनकी कहानियां नहीं मरती. Character, let's talk about real character or people who have lived. So character शायद हो भी नहीं. It's a fictitious character, 100% fictitious character. उसको जिंदा किया जा सकता है, उसको लाइफ में प्लांट किया जा सकता है, माइंड में लाया जा सकता है. या फिर एक इंसान अगर 80 साल जीता है, उसकी कहानी 800 साल जीती है. अगर वो कहानी सही ढंग से लिखी गई है, सही ढंग से, या फिर सही ढंग, ये नहीं बोला सच्चे ढंग से, ऐसा नहीं, सही ढंग से लिखी गई है, तो वो कैरेक्टर 800 साल या फिर उससे ज्यादा जीता है. तो लेट्स से आचार्य चाणक्य, the person lived for maybe 80 years or 70 years. But the legend of Chanakya, just imagine, the legend of Chanakya has been living over centuries and centuries, and we can relate with him even today. It's not just his book. His book, whether it is Arthashastra or the Niti Shastra book, is a simple plain Jane book, or is a factual textual book. But what adds rasa, or what adds that spice to Arthashastra, is the character of Chanakya, is the legend of Chanakya. Take Chanakya, the legend, away from Arthashastra, it will still have a lot of content, but then something will be missing. Something very powerful will be missing. Every character,
And politicians, leaders, they know this very well, and hence they have been using this in different ways. That good story goes beyond the character. It becomes a part of many person's life. Everybody wants to live that character. It gives meaning to life. Uh, how to define life? Very difficult. Hai na? How to define my life? So define your life to the self, or we keep doing it to others also, especially our kids. बोलते रहे हम ऐसे हैं, ऐसे हैं. So we all want to have a good story to represent our life. A story which we know that is full of drama, full of, and we are the main protagonists. We are the people. We all want to live a certain story in our life. There is a saying which says that uh, it appears to be one long story, but it's actually is a sequence of small narrative, and that's life. So it's the overall. If you look at uh, life in general, we all want to define life. So they say, right, that most of the part of life goes in defining life for the self and for others. और वो डेफिनेशन जब तक परफेक्टली नहीं होता, वो क्वेश्चन अटका रहता है, क्यों है यहाँ, क्या कर रहे हैं. So it's like you have to define life. So the stories can add meaning to it. अगर आपको ऐसे ही बोल दिया जाए कि नहीं ऐसे ही आए हैं, मर जाएंगे खा पी के, and then you do whatever you want, you will eat, you will survive, and you will die. अच्छा नहीं लगता. There's something missing. This is not how we want to live our life. We want to have the character of Bharat, Gitanjali, Aditi, Kalpana, or you want to do something. They stand for something. There is a story. There has to be a narrative. If others agree to it or not. So it defines life and it defines self also. So we want to live that character which is there in our mind, which we call by our own name. वो character जिंदा है, हम उसके हिसाब से जीना चाहते हैं. It helps in defining self. If we are facing pain in our life, trouble in our life, it may chances are there the pain or the trouble is just because the story which is running in our mind with respect to ourselves is a tragedy, in which the character or the story, the perspective is such that it's a tragedy. We just need to change that narrative, that perspective. Maybe from somebody else's perspective. Maybe just change the start and end of the story about ourselves, and suddenly we see life is different. So it's all about what goes here with respect to self. So that could be the power of story. What else do we need? When Patanjali describes yoga as chitta vritti nirodha, maybe he's just trying to make sure that you clean that memory drive and erase all the story and live the way it is in the moment. Don't have any story. Usko hard drive ko clean karna zaruri hai. Maybe that's what he is trying to define over there. Okay. Now, because we are talking about the science of story and not just the art of story, we need to understand what are the different parts of a story, of an elements of a story, whichever story, whether you are narrating it for an incident or from mythology. So what are the elements of a story? So these are the few elements of the story. We'll cover it quickly. Character. Aditi, we can just scan it through. Character, setting, plot, conflict, theme, point of view, and tone. These are the 7 main elements of a story. As a storyteller, as a story creator, as a narrator, these are the things we need to understand so that our story, which is a dish that we are serving to others, not just appears good, tastes good, but is also healthier for the other person. So the dish that we create in the form of a story should have all these ingredients in the right manner, and the recipe should be such that the dish appears really tasty to the palate and healthy to the gut. So let's see each of the elements. First one, character. Character, we don't have to talk much. Character is the driving force of the narrative, the main entity on which the focus light is present. It can be a person, an animal, a bottle, a water bottle, a fan, a bus,
So toy story or stories like that, it can be anything. So just the main entity on which uh, the focus is on, so the driving force, helps create empathy and emotional connection with the reader. We connect, every reader, every listener connect with the character. Yes, character are engaged in plot, in events, in action, but we connect with character. The character with which we connect the most, the maximum, we want to live that kind of story. So driving force of the narrative helps create empathy and emotional connection with the reader. A well developed character has a distinct personality, background, the motivation that drives their action through the story. Now, storytellers or story writers, they spend enough pages, enough uh, time on developing characters, building characters. इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये जस्टिफाई करने के लिए कैरेक्टर का बैकग्राउंड बिल्टअप करके देना जरूरी है. ये ऐसा ही है, दुर्योधन है वो करेगा, ये पाप बुद्धि है वो करेगा, ये धर्म बुद्धि. देयर इज स्टोरी इन पंचतंत्र और देयर इज स्टोरी इन महाभारत और रामायण. तो फर्स्ट द कैरेक्टर इज बिल्ट, क्यों ऐसा, दैट बैकग्राउंड, दैट personality is built in any story that will justify their action during any course of event. The main character or the protagonist is usually the one the reader identifies with the most and is invested in seeing succeed. तो ये वो कैरेक्टर है जिसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा रोल मॉडल एकदम स्टैंड आउट होता है, वेदर इट इज अर्जुन और कृष्णा और राम और जेम्स बॉन्ड और स्पाइडरमैन, बैटमैन, इनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं. ही इज द मेन वन एंड वी वांट देम टू सक्सीड बिकॉज इनका कैरेक्टर ऐसा बिल्डअप किया गया. बेचारा बहुत परेशानी से गुजरा है, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, अच्छा इंसान है, इसको तो जीतना बनता है, he or she should win or should come out great. So that has been created. See, don't get me wrong. Right now I'm just looking at even Ramayana and Mahabharata purely as stories, nothing else. I am not. Let's not enter into a debate whether it is history, mythology, or whatever it is. Just somebody has written it and beautifully written it. So let's consider them as just stories. Now, coming back to character. Characters can be dynamic, they can change or grow, or they can be static. Most of the Indian stories, in Indian way of narration, the character remain more or less static. वो अपने ही रस में रहते हैं, उसी रस में उभरते हैं. तो रावण बदला नहीं, रावण रावण रहा. राम बदला नहीं, राम राम रहा. तो कृष्ण बदला नहीं, कृष्ण कृष्ण. तो most of them, they are born with certain traits, they flourish in that trait, that trait defines them, so they rarely change in Indian mythological narrative, generally Indian way of storytelling. Western way of storytelling में बदलता है. एक साधारण सा इंसान, उसको आके एक स्पाइडर काट लेता है और फिर उसके पास आ जाती है चमत्कारी शक्ति. तो ऐसे बहुत सारे नैरेटिव हैं जिसमें बदलता है, एंड स्पेशली दैट चेंज डिफाइंस the story in some way or the other. So it can be static or dynamic. India में भी होता है dynamic characters, और वहाँ पे भी static characters होते हैं. So the antagonist or the villain, as we call it, or the character who opposes the protagonist, is also a key character in the story. So that antagonist brings the contrast. It's like a painting. So it brings a contrast or context in which the protagonist shines. बहुत. तो रावण के वजह से राम है, या फिर रावण की बुराइयों की वजह से राम की अच्छाइयां उभर कर आती हैं. सो वो एंटेगनिस्ट इंडिया में उसको उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना कि प्रोटैगनिस्ट को दिया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द एंटेगनिस्ट प्लेस इन ऑर्डर टू हाईलाइट द प्रोटैगनिस्ट. रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर्स एंड इंटरैक्शंस can create tension, conflict, or provide opportunity for growth and change. I'll go a bit fast. I'm sorry, I'm already beyond time. So yes, so there will always be a conflict between these characters, which will be the driving or which will drive the plot ahead in the story. Coming to setting. Character we have defined. Setting is the background. कब का है, कहाँ का है. So a story of World War II, a story or something which happened 1,000 years ago, or a story of Mohenjo-daro. So there was this movie which was created, Mohenjo-daro. So the setting set the background with respect to space and time. That gives a context. Why somebody is behaving like this? क्योंकि वो सतयुग था. Why somebody was behaving like that? क्योंकि वो द्वापर युग था. अभी लोग ऐसे क्यों behave कर रहे हैं? क्योंकि ये कलयुग है. So it creates a setting, and which kind of again justify or contextualizes the
behavior of the character. So can be real world location or a fictional location. Look at Harry Potter. The entire setting is fictional, entire setting, but still how beautiful it has been created. Plays a critical role in the story by providing context for the events that occur. Example, story World War II helps to establish a mood, tone, atmosphere to the story. So we understand the entire ambience, the entire surrounding of how things, why the car is like this, why they are not using mobile phones, and then the story becomes more complete to us. Impacts the character by influencing their actions, thoughts, and emotion. Next, Aditi, we can go a bit faster. Sorry. Yeah. A well-crafted plot has a clear beginning. No, now come to plot. Plot is very essential. What I have seen is most of the teachers are very good storytellers, and good teachers are good storytellers. If there is one mistake that we teachers do with respect to teaching through stories, is that we kind of uh, don't frame the plot properly. We understand the characters, we understand the theme setting, सब कुछ. वो जो plotting है, वो जो sequence है, वो एक एवरेज और एक बहुत अच्छे टीचर या फिर बहुत अच्छे स्टोरी टेलर के बीच का फर्क ले आता है. ये सीक्वेंस में आएगा. तो प्लॉट कैसा है, द फ्लो ऑफ इवेंट्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेल क्राफ्टेड प्लॉट हैज अ क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, and there is no standard pattern. Stories, a particular director or a particular storyteller will have its own way of sequencing things, or that's the plot. So हर एक का एक अपना स्टाइल होता है. So each part of the story builds upon the previous one to create a sense of progression and momentum as it grows ahead, how it goes ahead. So it can be linear plot, it can be a cyclical plot, it can be to and fro plot, अलग-अलग type of plot. We'll see an example at the end. The main conflict or problem the character faces is what drives the plot. We'll come to conflict. The conflict can take different forms. Example, personal struggle hai, external threat, or mystery to be solved. So there are different type of stories based on the conflict. Conflict is like जहां जाके अटक जाता है. अब क्या होगा? अब यहाँ से कैसे निकलेगा? कैसे बाहर आएगा? This is the problem. How is the solution going to appear? So that's the conflict. Next. Can we go to the next slide? So plot, the resolution of the conflict is often that brings story to a satisfying conclusion. Happy ending, sad ending will depend upon how the conflict ends. The plot can also include various subplots. So Panchatantra is a classic of how one story will have layers and layers and layers of story. Mahabharat again is a classic case of how every main plot will have subplots. वो कुरुक्षेत्र के वॉर का कोई भी किसी भी 18 दिन के वॉर के टाइम पे किसी भी टाइम पे एक स्नैपशॉट में अगर आपने फ्रीज कर दिया उस वॉर को, कोई भी कैरेक्टर उठा लिया उसमें से, उसका एक सबप्लॉट डेफिनेटली होगा, मिनिमम एक सबप्लॉट होगा, उससे कहीं ज्यादा सबप्लॉट हो सकते हैं उसके. Every subplot kind of develops the main plot and moves it ahead. The pacing of the plot is also important and keep the reader engaged, very important. Based on the audience, the pacing should vary. So sometimes we come from a theater and say that बहुत slow movie था, sometimes we कहता बहुत fast था, कुछ समझ नहीं आया. So based on the audience, you should know कब pace बढ़ाना है, कब pace रोकना है, कौन सा ideal pace है sequencing का, and that will drive the plot ahead. Next, conflict, the most critical part in a story. Why we enjoy the story, because this is conflict. So I've seen the movie Rockstar, right? And before he becomes a rock star, the name of Ranbir Kapoor is Janardhan. And one day he comes out and says, मुझे रॉकस्टार बनना है, बट मेरी कहानी में कोई पेन ही नहीं है, ना मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, ना मेरे साथ किसी ने छेड़खानी की है, ना मुझे घर से निकाला गया है, कुछ चैलेंज ही नहीं है. ऐसे सीधी सादी कहानी के साथ मैं कैसे रॉकस्टार बनूंगा? So what he is telling over there is that there should be a problem, a conflict, which will bring all the attention, and then people are hooked to it कि अब ये मामला कैसे सुलझेगा, इसमें से कैसे बाहर निकलेगा. Whether it is Ravan taking away Sita, whether it is the Kauravas not giving the land to Pandavas, whether it is any story in Panchatantra, there will be some conflict, a challenge, a struggle period, which whether it is World War II, real life की अगर example ले ले तो कहीं ना कहीं वो अटक जाता है, वो deadlock होता है, अब क्या,
That conflict drives the story, is the center point of the story, जो उसको hook करके रखता है. बिना conflict के story में मजा नहीं. So conflict is essentially, वो boring story होती है. So conflict is essential to story. It creates tension and drama, which keeps the reader engaged and invested in the outcome. A well-crafted conflict allows the character to grow and develop over the course of the story. Conflict over किस तरीके से overcome किया conflict को will define the character. Ram is Ram because of the manner in which he was able to bring back Sita. Krishna is Krishna because of the manner in which he was able to give the land back to the Pandavas. So वो conflict था, उसको define कर, उन दोनों character को define किस तरीके से किया गया. एक को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, दूसरे को पता नहीं किस किस नाम से कहा जाता है. Reason is how they were able to overcome that conflict, how they were able to solve that conflict. Often resolving the conflict is the story's goal. The way the conflict is resolved can significantly impact the reader's emotional response to the story. इसके लिए किसी किसी को रामायण बहुत बोरिंग लगती है और वहीं पे महाभारत बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है जिस तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया गया. So again, it depends upon how one looks at the story or how one is able to connect with the story. Next, theme. Theme is the rasa, is what exactly you want to, is that taste which you want the listener mind to linger even after he or she has consumed the story. तो खाने के बाद जो टेस्ट मुंह में बरकरार रहता है, जो रह जाता है, वो थीम है, वो फ्लेवर है, वो मेन फ्लेवर जो एसेंस जो रह जाता है. So that day also we took the same example. खीर में आप ये डालो वो डालो, चावल का बनाओ, साबूदाने का बनाओ, किसी का ही बनाओ, बट अगर एक चीज है खीर में जो खीर को डिफाइन करती है, वो है मीठा. So that taste that should be there. This is a theme. So whether it is a love story, it's a tragedy, it's a mystery, or whatever it is. So it's that one theme. A very third class, third grade movie or a time pass movie वो मूवी होती है जिसमें कोई थीम नहीं रहता. आप जाते हो, एंजॉय करते हो और वहीं पे छोड़ के तो आप आते हो, बाहर आके बोलते हो वन टाइम वॉच है, या फिर टाइम पास मूवी है जिसका कोई थीम नहीं. अदरवाइज देयर विल बी सेंट्रल थीम. Themes can be broad or specific, and they can take many different forms, such as love, betrayal, forgiveness, or redemption. The theme is often what gives the story emotional resonance. It resonates even after centuries. A good story with a proper centralized theme. धर्म का अधर्म पर जीत. Again, धर्म का अधर्म पर जीत is the central theme which resonates even today. So themes can be explicitly stated or implied. So some of the explicitly धर्म का विजय, या फिर वो characters, वो स्टोरी इस तरीके से जाती है कि वी अंडरस्टैंड किया दिस इज द थीम. तो कभी डायरेक्टली स्टेट किया जाता है, कभी इम्प्लाइड. थीम कैन बी एक्सप्लोर्ड सेटिंग ऑफ द स्टोरीज. पॉइंट ऑफ व्यू. इज माय वॉइस क्लियर? Okay, fine. Yes, Bharat. Okay, thank you. So point of view is किस कौन नरेट कर रहा है? Who is the person who is narrating the story? Is the first person who has lived, who is the main. So if Arjun tells his story, his autobiography, so it's the first person view. I, me, my. Second person view, the narrator. So for example, the narrator addresses the reader as you. तुम वहां थे, तुमने ये सब होते हुए देखा, तुमने क्यों नहीं किया. Point of view kind of highlights the creativity of the storyteller. Look at Mahabharat, B.R. Chopra का Mahabharat and the narrator, समय. So it's a third person view, omniscient. समय खुद नरेट कर रहा है. कितना कितना ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू है. वेद व्यास जी ने लिखा था उसको, एंड उन्होंने जो अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए थे, जब उसको समय नरेट करना, बी.आर. चोपड़ा का जो मास्टर स्ट्रोक था in the entire Mahabharat will be this, to make sure that this story is narrated by nobody else than Samay himself. मैं समय हूं वाला जो डायलॉग है, और वो देख पा रहा है क्या हो रहा है, वो समय है, वो आगे जाके देख पा रहा है कि मैं जानता हूं कि इसका आगे परिणाम क्या होगा, वो पीछे जाके देख पा रहा है, मैं जानता हूं कि ये क्यों हुआ. तो वो समय है. थर्ड पर्सन व्यू इज ओमनीसिएंट व्यू, हु नोस दिस. तो हमें बचपन में कभी निबंध लिखने बोला जाता था कि एक लेट्स से एक किताब की आत्मकथा लिखो, एक कलम की आत्मकथा लिखो. इट्स नथिंग बट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ
The same story is seen from different angle by different observer, and it can actually change. Look at the present book on Indian mythology. If there is one thing that has been changed or played with most, it's the point of सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेम स्टोरी को अलग अलग ढंग से प्रेजेंट किया जाए. ओके, नेक्स्ट. Tone. Now, tone is very interesting. Tone is again very specific with respect to the storyteller. हर storyteller का एक अपना टोन होता है. कोई sarcasm का इस्तेमाल करता है, कोई ह्यूमर, कोई रोमांटिसिज्म का इस्तेमाल करता है, कोई जॉयफुल स्टोरी लिखता है, कोई ट्रेजेडी लिखता है. तो अपना एक टोन होता है. टोन इज द मैनर इन विच यू वांट टू टेल द स्टोरी. जिस तरीके से आप वो स्टोरी देना, क्या चाहते हो कि आपका लिसनर एंड में क्या करे, रोए, सोचे, हंसे, हाई फील करे, यूफोरिक फील करे, कैसा फील. तो वो टोन होता है. तो like let's say Premchand has his own tone, whereas Pula Deshpande will have his own tone. Shakespeare, the dramatist, the great dramatist, was a master of tragedy. उसका वही कहानी है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट उसका टोन एकदम एक डार्क, हल्का सा डार्क एलिमेंट टू द डिस्प्ले, एंड दैट टोन वाज अ बिट ट्रेजेडी, थोड़ा अलग ढंग से खत्म होता है. So described using a variety of adjectives like joyful, serious, sarcastic, melancholic, humorous, romantic. The tone can also be described as formal or informal, respectful or disrespectful, objective or subjective. It is the emotional quality or atmosphere that is created after the story has been narrated. The author's use of language, word choice, imagery and style that will define. अलग-अलग ढंग से हम सेम स्टोरी को प्रेजेंट कर सकते हैं अलग-अलग टोन के साथ. So these are the 7 elements of a story. When you create a story next time, or when you look at, when you read a story, when you listen to a story, when you watch a story, इनको थोड़ा ध्यान से देखना, इस लेंस से देखना. You'll understand कि स्टोरी टेलर ने क्या सोचकर ये बनाया होगा या क्या सोचकर ये किया होगा. Okay. Now quickly, just Bhishma is one character I was really fascinated with when I watched Mahabharat for the first time. It was only later stages that I developed a liking for Arjun, but for me, Bhishma stood out. There are people who say that Mahabharat is not a story of Krishna, Mahabharat is not a story of Draupadi or even Arjun, it is a story of Bhishma. So, killing of the immortal, let's take a small story. Now, Bhishma की कहानी कुछ ऐसी है, तो ये छोटा सा कहानी मैं बस 2-3 मिनट में लेता हूँ. It is the 9th day of Kurukshetra war. 9th day. It ended with Pandavas having a lot of casualties. Lot of casualties. They knew one thing for sure. जब तक भीष्म है, तब तक उनकी जीत हो ही नहीं सकती, असंभव. 9th के नाइट में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या करें. कृष्ण एज यूजुअल कम्स विद द आइडिया कि भीष्म को हराने की या मारने का जो आइडिया है या फिर जो टेक्निक है, वो हमको सिर्फ एक ही जन बता सकता है, खुद भीष्म. तो युधिष्ठिर और बाकी लोगों को बोलते हैं कि चलो भीष्म के पास चलते हैं. युधिष्ठिर, आप अगर मन से पूछोगे तो मना नहीं करेंगे. तो पांडव जाते हैं. युधिष्ठिर बड़े ही प्यार से पूछते हैं, पितामह आपके होते हुए तो हम ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे, किस तरह जीता जाए आप. भीष्म बड़े ही प्यारे ढंग से स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं जब तक अस्त्र और शस्त्र अपने हाथ में उठाए हुआ हूं, तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते. तुम मुझे तभी परास्त कर सकते हो, मार सकते हो, अगर मैंने शस्त्र नीचे डाल दिए तो. और ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर मेरे सामने कोई क्षत्रिय ना आए तो ऐसा हो सकता है. मैं अपने शस्त्र टाल दूंगा, हाथ सारे नीचे फेंक दूंगा और मैं फाइट नहीं करूंगा. और ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति है पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और वो है शिखंडी. शिखंडी के आने पे ही ये हो सकता है. कैन यू इमेजिन, भीष्म खुद बता रहे हैं कि उनको मारने का टेक्निक क्या है. वो लोग वहां से जाते हैं, रास्ते में चर्चा होती है. नेक्स्ट डे, 10th डे ऑफ द वॉर, अर्जुन के रथ पे कोई और भी है, अर्जुन अकेला नहीं है. और अभी रथ के पीछे नहीं खड़ा है, अर्जुन के आगे खड़ा है या खड़ी है, एंड दैट पर्सन इज शिखंडी. शिखंडी को
अर्जुन को रोकने के लिए सब लोग कोशिश करते हैं कि भीष्म पितामह से दूर रखा जाए, बट फाइनली वो पहुंच जाते हैं. When Shikhandi comes face to face with Bhishma, he does exactly what he had said the night before. He throws away all his weapons, stands there. Let's freeze this moment. अर्जुन के सामने जो खड़ा है या खड़ी है, शिखंडी कौन? क्यों इतने सारे महारथी को होने के बावजूद शिखंडी के सामने भीष्म ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए? तो शिखंडी का सब प्लॉट कुछ ऐसा है. Decades ago, Shikhandi was in a previous birth a princess known by the name Amba, sister to Ambalika and Ambika, the princess of Kashi. काशी के राजा ने अपने तीनों बेटियों का स्वयंवर रखा था, बट हस्तिनापुर को इनविटेशन नहीं दिया था, which was felt like an insult by Bhishma, who himself never wanted to get married, but for his step brother विचित्रवीर, he wanted to make sure कि ये क्वीन उनसे शादी करे. तो वो पहुंच गया स्वयंवर में, भीष्म खुद पहुंच गया कि मैं जाऊंगा, और सबको चैलेंज करता है जो भी लोग वहां पे आए कि अगर किसी को मुझे युद्ध में परास्त कर सको तो मैं इनको लेने दूंगा, वरना ये तीनों रानियां हस्तिनापुर जाएंगी, ये तीनों राजकुमारियां हस्तिनापुर जाएंगी. भीष्म को कोई चैलेंज नहीं करता, शल्भ करता है बट उसको हरा दिया जाता है. वो तीनों राजकुमारी को लेके जाता है. वहां जाके अम्बा उसको कहती है कि मैं तो शल्भ से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती थी, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए? तो भीष्म कहता है कि मुझे माफ करना देवी, मुझे पता नहीं था, आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं शायद नहीं जाता, आप वापस जा सकते हो. भीष्म पूरे रिस्पेक्ट के साथ अम्बा को वापस भेजता है शल्भ के साथ. शल्भ कहता है कि क्षत्रिय होने के नाते मैं एक बार अगर किसी लड़की को हार गया हूं तो दोबारा स्वीकार नहीं कर सकता, वो उसी की होगी जिसने उसको जीता है, और वो भीष्म है. तो अम्बा भीष्म के पास वापस जाती है और कहती है कि मुझसे शादी करो, क्योंकि अब तो मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता. भीष्म कहता है मैं तो प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ, आई एम अ सेलिब्रेट, आई कैनॉट मैरी. तो अम्बा कहती है कि ऐसा अगर हो सकता, ऐसा तो फिर मुझे लाया. तो अम्बा गुस्से से चले जाती है और तपस्या करने लगती है. तपस्या करते वक्त फाइनली बहुत सारी कहानियां हैं उसके तपस्या की भी. फिर बाद में जब वो तपस्या करती है तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और बीच में भी वो परशुराम का युद्ध भी है उसके अंदर. प्रसन्न होते हैं और फिर उसे वरदान देते हैं कि मांगो, क्या मांगते. तो अम्बा कहती है मैं भीष्म की मौत का कारण बनना चाहती हूँ. सिंपल. तो शिव भगवान कहते हैं तथास्तु, अगले जन्म में तुम ही कारण बनोगे. और फिर वो खुश होके अपने आप वही उसी आग में वो जल जाती है, मर जाती है. अम्बा गेट्स रीबॉर्न एज शिखंडी, द एल्डर डॉटर, और द एल्डर डॉटर, सॉरी द एल्डर ब्रदर ऑफ द्रौपदी. और वहां पे फिर से कंफ्यूजन है कि ये लड़का है या लड़की है. तो इवन द एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट able to figure out, the doctors are not able to figure out कि exactly पूरी तरह लड़का है या लड़की है. He gets raised as a son, and but उसकी शादी के बाद पता चलता है कि शायद she is a female. तो फिर से वो गुस्से से त्याग करके सब चले जाती है, एक फॉरेस्ट में चले जाती है, तपस्या करती है. वहां पे एक यक्ष आता है जो उसे वरदान देता है कि मेरे साथ तुम्हारा सेक्स जेंडर एक्सचेंज होगा, नाउ यू विल बी अ मेल, आई विल बी अ फीमेल टिल द टाइम यू कम बैक. तो वो वरदान के साथ शिखंडी becomes a male, a warrior, comes to Mahabharat, fights, and the fight, though the fight with Bhishma is remembered, Shikhandi's fight with Ashwathama is legendary. The first day, the 7th day, and the 18th day of the war all describe the fight with Ashwathama as legendary. दोनों के बीच में घमासान फाइट होता है, but शिखंडी is remembered for what he did or she did on the 10th. तो जब शिखंडी सामने खड़े हैं भीष्म के, भीष्म पितामह अस्त्र त्याग देते हैं, अर्जुन शूट करता है एरो आफ्टर एरो, एंड भीष्म पितामह वहीं पे नीचे गिर जाते हैं on the bed of arrows. 18th day अश्वत्थामा kills शिखंडी. उसके 43 डेज के बाद भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु खुद अपना देह त्यागते हैं, because he sees that Hastinapur is now safe. Can you imagine? Just one story of Bhishma's killing, how this great warrior got killed, has characters of Shikhandi, Ashwathama, Dushtadum, उनका नाम मैंने नहीं लिया, द्रुपद, द्रौपदी, परशुराम. परशुराम का सब प्लॉट अलग था चलता है इसके अंदर. 23 दिन का वॉर हुआ है भीष्म और परशुराम के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में, जस्ट फॉर अम्बा. तो
कितना ब्यूटीफुली ये स्टोरी को वीव किया गया है, कितने सारे कैरेक्टर्स को रखा गया है, थीम अगेन बीइंग सेम, दैट थीम अगेन बीइंग लाइक धर्म का विजय होता है, धर्म आगे चलता है, जो है, जो चीज हो रहा है वो किसी के पास कर्म का फल है, जो चीज आगे होगा वो प्रेजेंट कर्म का फल होगा। ये थीम चलता जा रहा है, ये तल चलता जा रहा है। भीष्म खुद अपने मौत का कारण बनता है। And see how many layers, exactly how many layers are present in this one subplot of Bhishma's killing. We are talking about Mahabharata, the epic, and one incident with respect to Bhishma's killing has so many layers. As Rajesh pointed out in the first part, not in India, not even a single story is written without a theme or without a context. Everything has a lesson inside it. Now you look at the story from Amba's point of view, from Shikandi's point of view, from Arjun's point of view, from Yudhishthir's point of view, from Ashwathama's point of view, from Bhishma's point of view, or you look at the story from Samay's point of view, you will get different lessons, different contexts, and different learnings coming from the same story. So with that, I take a pause. Sorry, Gitanjali, I've eaten away some of your time. Please carry on. Nahi, Bharat, I think everyone enjoyed, and so did I enjoy listening to you. So, first of all, namaste to everyone. And I would like to take this opportunity to thank Chiranjeev Gurukul, Rajesh, Amita, Bharat, Aditi, Meenakshi, Vinaya, and Upasna, everybody who's behind this Sammelan, that today Bharat and I have been here and we are sharing, our thoughts and our learnings with you. And special thanks to Bharat. He's been always an inspiration to me when it comes to storytelling. And he's done a fantastic job. So I'm at ease right now कि भाई मुझे ज़्यादा explanation नहीं देनी पड़ेगी. So moving ahead, with another story from the very famous Panchtantra. आप सबने बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, तो आज दोबारा से स्टोरी सुनते हैं, The Monkey and the Crocodile. So होता ये है कि एक बहुत सुंदर जंगल है. There's a beautiful jungle with lush green trees and there's a river flowing through it. And on the bank of river, there are many trees full of fruits, and one of such trees is a jamun tree. On that jamun tree, there lives a monkey. His name is Rakmukha. So like a normal monkey, what is his behavior? He would jump, he would eat fruits and enjoy his life. So it's a usual day for Rakmukha, the monkey, and he's hopping around, enjoying the fruits. And what he sees suddenly from the water body is a crocodile which is emerging. So monkey just pauses and looks around the crocodile. The crocodile is coming out, and to the monkey, it's seen that the crocodile is hungry. बंदर को लगा कि ये भूखा है और भाई मेरे पास तो खूब सारा खाना है, इस पेड़ पे बहुत सारे मेरे पास जामुन है, तो क्यों ना मैं ये जामुन क्रोकोडाइल को ऑफर करूं. वो एक मिनट ये सोचता है कि भाई ये क्रोकोडाइल है, बट मंकी सोचता है कि चाहे फ्रेंड हो या एनिमी, अगर हमारे घर पे कोई भी आए तो हमें खाना जरूर ऑफर करना चाहिए. ये सोच रखते हुए the monkey starts throwing jamun towards the crocodile. The crocodile is also, hungry, and he gladly accepts the hospitality of the monkey. Then the crocodile introduces himself to the monkey. Can we go on to the previous slide? Yeah. The crocodile says that I appreciate hospitality, and my name is Karmukha, and I live across the river. And so after eating food, giving his introduction, the crocodile and monkey starts conversating. While they are so engrossed in their conversation that the day passes by and comes the evening. Now it's time for the crocodile to return home. But crocodile is very pleased meeting with the monkey, and of course he's enjoyed the lovely food.
So the crocodile tells the monkey that, please give me permission to go back home. My wife must be waiting at home, but I shall come tomorrow. And he heads towards back home. Now, the next day. The crocodile the next day again comes. Monkey offers him jamun and both of us start conversating. Now, this routine happens day on day. So basically, they become great friends. Monkey is sharing jamuns, crocodile is accepting and having a great conversation. Now, gradually what happens, the crocodile, after eating some jamuns, decides to take some jamuns for his wife as well. And because the jamuns are really sweet, the wife also accepts those jamun and cherishes it. So this goes on for a long time until one day, the crocodile returns home, shares some fruit with his wife, and while the wife is enjoying the fruit, she says to her husband, "Oh dear, from where are you getting these jamuns every day?" The crocodile smiles and says that, "My dear, I have a friend who's a monkey who lives on a jamun tree. Every day he gives me jamuns and I get it for you as well. And we have a great time during the day conversating." Suddenly, the crocodile's wife paused and she said, "I wonder, these jamuns are so sweet. What about that monkey who's enjoying the jamun every day? His heart must be much sweeter." Now, this catches the crocodile's attention. What is his wife trying to say? So he tells his wife, "Dear, let's not talk about killing the monkey." He's got the intention understood. And he's trying to convince his wife, saying that, "Oh dear, let's not think about that. He's my friend. He's been offering us fruit. Why are you thinking about it?" But now usual wives are adamant. They want things their way. So the crocodile's wife says, "It seems that you don't care for me. It seems that this is not a monkey, but another female crocodile that you're hanging around with. Huh? So that's the reason you're not willing to get the monkey's heart. So because it's not a monkey, it's another female crocodile that you're having a daily conversation with. So I don't care. Either you get the monkey or don't talk to me." A general conversation that sometimes happens at homes also. So now the crocodile understands that he cannot win over from his wife and decides to get the monkey's heart for his wife. And next day morning, when he heads towards the jamun tree, basically towards his friend, he's of course a little upset, in a dilemma, not feeling easy. And when the monkey looks at the crocodile, he understands that the crocodile is a little upset. So the monkey asks the crocodile, "Why are you looking so upset?" So to that, the crocodile says, "Well, you know what? My wife is very upset with me. She said that I've been enjoying your hospitality every day, but I've not offered you or called you over home for a meal. So my wife wants you to come over and enjoy a meal with us." So now there was always one-sided, that the monkey would give the jamuns. Now the crocodile is trying to express that it's time for me to return your hospitality or do something for you in exchange. Monkey, of course, is happy listening to this, but he says, "You know what? I'm a mammal. I'm a monkey, I'm a land animal, whereas you stay on the river. And I can't, come along with you because where you are staying, I can't come on. I can't even, swim."
So the crocodile tells him that don't worry, friend. What you can do is you can jump on my back and I'll take you home. The monkey says, thinks for a moment and agrees. Monkey मान जाता है और बोलता है ठीक है भाई, आपको मेरी खातिरदारी करनी है, आज मैं भी आपके साथ चलता हूँ. So now the monkey jumps on the back of the crocodile and they soon head towards the crocodile's home where monkey is believing that a good meal is awaiting him. Now they are halfway their way, and when we are saying halfway, it's that part of the river they are crossing which is very, very deep, and monkey is not very used to this kind of mode of transportation, and of course little scared with water also. So the monkey cautions the crocodile to go slowly so that he doesn't drowns in the water. At that very moment, the crocodile thinks that let me tell the truth to the monkey. It's time that I tell the truth to the monkey because right now he doesn't have an option to escape. पानी में तो वो जाएगा नहीं, थोड़ा सा डरा तो वैसे ही बैठा है, तो उसको मेरे साथ जाना ही है. So there is no harm कि मैं अभी उसको सच्चाई बता दूं. तो crocodile थोड़ी हिचकिचाते हुए monkey से कहता है, dear friend, I'm sorry, I lied to you. एकदम से monkey चौकन्ना हो जाता है कि भाई lied to me, क्या बोल रहा है ये. Crocodile says, you know what? I'm not taking you for a meal. I'm taking you home to serve you as a meal to my wife. The monkey says, why are you doing this to me? To which the crocodile says, my wife wants to eat your heart, which is supposedly very, very sweet because you eat jamuns every day. Now the monkey, of course, कभी भी ऐसा होगा आपके साथ भी कि भैया सामने डेथ है या एक बहुत स्ट्रेस सिचुएशन है, इंसान घबरा हो जाता है, पैनिक हो जाता है, बट हमारा जो ये मंकी है स्टिल रहता है, काम रहता है, no expressions on his face or his body language. He is very calm. And he says, बस इतनी सी बात, your wife wants my heart. You should have told me before. I actually keep my heart on the same tree that I stay. Had you told me before, I would have brought my heart along with me. So let's do one thing. The monkey says to the crocodile, let's do one thing. Let's go back and I'll get the heart and we'll give it to your wife. Now the crocodile is really surprised, but he says, that's the point. My wife wants the heart, so it's important that I go back with the monkey and get the heart for my wife. So the crocodile agrees and they take a reverse turn, U-turn लेते हैं and वापस जामुन के पेड़ की तरफ चलते हैं. अभी जैसे the crocodile comes near the tree, the monkey obviously jumps really, really high on the tree कि भाई जान बची तो लाख हो पाए. अभी monkey की तो जान बच गई, वो ऊपर है और यहाँ crocodile उसकी राह देख रहा है. कुछ समय रुकने के बाद the crocodile says, dear friend, Raktmukha, get your heart very soon, no? My wife must be waiting. We need to go back. Now the monkey responds, not reacts, responds to the crocodile and says, you were my friend, but you betrayed me. Are you a fool who thinks that somebody would keep their heart on a tree? You betrayed me. I shall never trust you. Just go away from me and never come back. Crocodile is disappointed, goes back and never returns. ये एक्चुअली मेरे बचपन की ना बहुत फेवरेट कहानी है जो मेरी मम्मी मुझे सुनाती थी. I wish she would have been here and she would have told me how did I narrate the story.
But coming on to the story, before I share about the three main learnings from the story, would anybody like to share their reflection on the story? You know, about the relationship, time for crocodile's heart to break. Very true, Meenakshi. Anything else? What else comes to your mind? Do you think that the monkey was wise enough to trust the crocodile, you know, to be a friend or to go with him? No. We should be wise enough to select, to choose our friends. Right, Naina ji? हम अपने फ्रेंड्स, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, उनका सिलेक्शन हमें बहुत ही कॉशियसली करना चाहिए. Second thing, in any relationship, what kind, yes, Meenakshi, correct. This also showcases the presence of mind of the monkey. Second thing, excellent, Rani ji. She says that the monkey did not panic. Instead of panicking, he was calm enough so that he could take charge of the situation. And exactly that happens. If we are calm, we can think and we can respond. Imagine, you know, every day how the armed forces are, you know, on the border. If they start panicking with every bullet which is coming or every bomb that we are doing, they will not be able to action back. That's the beauty of the calmness and ability to respond. Yes, also building boundaries of sharing our vulnerability, knowing and strengths and drawbacks. Excellent. We should exactly know with whom what to share and what not to share. एक और इसका छोटा एग्जाम्पल दूंगी. रावण है. रावण की अगर हम बात करें तो रावण की डेथ क्यों हुई थी? इसलिए क्योंकि उसने अपना जो भेद है, मरने का भेद है, अपने भाई को बता दिया, विभीषण को. और विभीषण नहीं, वो एक्चुअली राम जी को बताया जिसकी वजह से मरा. सो वी शुड बी वेरी कॉशियस कि हम किसको अपने बारे में क्या बताते हैं. ग्रेट. नॉट ट्रस्टिंग blindly. Never trust somebody blindly, irrespective of whatever. You should always use your senses. The monkey knew that the crocodile is a creature who would eat anybody for survival, right? He is going to eat somebody for survival. So he should have been very cautious. साथ में वो चल पड़े महाराज. वो भी दावत खाने, उनको लगा मैडम जी जो है मिसेस क्रोकोडाइल उनको खाना देंगी, मगर ऐसा तो था नहीं. It is important to ascertain real interest of other person before committing yourself. Yes, assessing what is going in somebody's mind. It's a difficult thing, but always understand the situation. कि भाई sad होकर के कौन न्योता देने के लिए आता है. Very good. Another learning is we also need to understand the basic traits of who are we dealing with, and traits always show through. Exactly, and exactly in Panchtantra, why have these been narration using those, why was a monkey used and why was a crocodile used? कि भैया उनकी फितरत बता रही है ये story. Okay, coming on to my last learning. Okay, Raghunandan ji says help to maximum but never anticipate in return. Think before the next book. Exactly. और यही चीज हम काफी गेम्स में भी सीखते हैं. चेस में आप चेस में ऐसे ऐसे नहीं खेलते, आप सोचते हो, रिस्पॉन्ड करते हो सिचुएशन. एक आखिरी चीज लर्निंग जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि भाई आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको कॉशियस होना चाहिए कि आप जो चीज मांग रहे हो क्या वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल. यहाँ पे क्रोकोडाइल ने
क्रोकोडाइल की सॉरी वाइफ ने बहुत ही अनरीजनेबल चीज मांगी कि भाई मुझे उसको खाना है जो आपका फ्रेंड है. दैट्स अनरीजनेबल, राइट? सो हमें सिचुएशन देख के और हमेशा रीजनेबल चीजें करनी चाहिए. सो ये थी हमारी कुछ लर्निंग्स एंड थैंक यू सो मच. आप में से बहुत सारे लोगों ने लर्निंग शेयर करी. अभी हम बात करते हैं स्टोरी की और बच्चों की. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ हाउ डू दी स्टोरीज वर्क फॉर चिल्ड्रन. अभी भरत ने इतनी ब्यूटीफुली इतनी सारी चीज बताई कि भाई इमेज क्रिएट हो जाती है, सब चीज होती है, मगर जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे नेचुरली आर मोर क्रिएटिव. सो अगर हम किसी बच्चे से एंड देयर इमेजिनेशन कैन गो बियॉन्ड व्हाट वी आर थिंकिंग. कि जब हम बड़े हो जाते हैं हम काफी परसेप्शंस पे, प्री कंसीव नोशंस पे भी चलते हैं अनकॉन्शियसली भी. लेकिन जो बच्चे बिल्कुल एक मतलब एक फ्रेश माइंड है, उनकी क्रिएटिविटी हमसे भी ज्यादा सुपर्ब है, वो हमसे भी बढ़िया विजुअलाइज कर लेते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी से इफ आई टेल अ चाइल्ड एन एप्पल एंड अ मंकी, तो इमीडिएटली बच्चे की आंखों के आगे एक एप्पल आ जाएगा और एक मंकी आ जाएगा. द सेम वे प्रोबेबली जैसे हम एक 3D मूवी को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं ना, बच्चे भी वैसे ही कर रहे हैं. तो बच्चों के लिए जो है ये स्टोरीज जो है बिल्कुल हेल्प कर सकती हैं उनको वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए. नॉट ओनली वैल्यूज, इनफैक्ट लाइफ स्किल्स ऑल्सो, राइट? जैसे पिछली स्टोरी में हमने सुना हाउ टू बी काम. एकदम से इमोशनल होके एक चीज को नहीं, डिसीजन नहीं लेना. फिर जब बच्चा एक कहानी सुनता है ना, अपने दिमाग में तो विजन बनाता ही है, बट वो री एग्जामिन भी करता है, यू नो, उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल, सिचुएशन, उसका बिहेवियर कैसे दूसरों के बारे में, ये सब चीजें जो है बच्चा बहुत आगे तक सोचता है. इनफैक्ट मैंने चैट में देखा था जब भरत शेयर कर रहे थे, तो somebody just says mentioned that story helps to fine tune the person within our mind. That's the power of story. तो सोचिए हम स्टोरीज को कितने अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं टू कल्टिवेट द माइंड ऑफ चिल्ड्रन who are the future leaders. सो स्टोरी जो भरत ने सारी हमको इंपॉर्टेंस बताई, बच्चों के लिए हम उसको कैसे पावरफुली यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम बात करते हैं कि भाई जो स्टोरी नरेशन है, जैसे भरत ने भीष्म की कहानी बताई, मैंने आपको ये स्टोरी बताई. अभी हम बात करते हैं कि जब हम बच्चों के साथ स्टोरीज कर रहे हैं ना शेयर, तो क्या कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए. क्योंकि भाई हमारे बच्चे होते हैं सुपर एक्टिव, सुपर क्रिएटिव और सुपर डिस्ट्रैक्टिव भी, एकदम से ध्यान भी भटक जाता है. सो अगर आप ये देख सकते हैं, ये स्टोरी नरेशन की जो मैंने यहाँ पे स्लाइड करी है और जो पहले स्लाइड करी थी उसमें डिफरेंस क्या है. पहले स्लाइड में मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट मंकी और क्रोकोडाइल किया था. नॉट टू से कि जो बड़े हो जाते हैं उनकी लाइफ और थिंकिंग वैसी होती है, नहीं. पर्पस था यहाँ पे कलर डालने के लिए, क्योंकि हमें जो कलर है यहाँ पे बच्चों के लिए ऐड करना पड़ेगा. लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, what is the most important thing if we want to narrate that story for a child or a group of children. सबसे पहला रूल जो कि मेरे मेंटोर मतलब मेरी मेंटोर है, उन्होंने मुझे बताया कि भाई अगर तुम गीतांजलि बच्चों को स्टोरी सुनाना चाहती है, इग्नाइट द चाइल्ड विद इन. अगर आप उस समय जब बच्चों को स्टोरी सुना रहे और आप मन से अगर आप बच्चे नहीं है उस समय, तो वो क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा. आप सिर्फ बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि नहीं वो अलग है. आप एक अलग जोन में हैं, बच्चे अलग जोन में. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने मन में वो बच्चा जरूर इग्नाइट करना चाहिए, ताकि वो जो फन कैरेक्टर है वो हमेशा बना रहे और आप बच्चों की तरह ही सोच करके वो स्टोरी को प्रेजेंट करें. कभी कभार होता यह है कि हम लेट्स से कुछ चीजें अपने बच्चों को बताना चाहते हैं,
फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू टीच मॉरल वैल्यूज ऑफ राम, तो मैं इतनी सारी चीजें बच्चों को बताऊंगी, बट क्या वो बच्चे के अंदर वो स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है उन सब चीजों को ग्रास्प करने की, व्हाट आई वांट टू से वर्सेस व्हाट कैन बी ग्रास्प फ्रॉम द चाइल्ड। तो इसलिए अगर हम बच्चों की सोच के साथ चले तो हम अच्छे नरेटर भी बन सकते हैं, उनके साथ उनकी वेवलेंथ को मैच कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज याद करो, हम सबने जो बचपन में कहानियां सुनी थी मम्मी से, ग्रैंड मदर से, वो क्या उनकी स्पेशल क्वालिटी थी कि वो हमारे से हमारी तरह बच्चा बन करके हमें सुनाते थे। और भाई इतने पेशेंटली, इतने प्यार से बार बार हम अगर एक ही स्टोरी बोलते थे तो बार बार उतनी पेशेंट, उतने ही इमोशंस के साथ हमें वो स्टोरी सुनाते, राइट। एक चीज और, बच्चों के साथ हमारे जो हैंड एक्सप्रेशंस है, सॉरी हमारे एक्सप्रेशंस और हैंड्स है, वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं देन एन एडल्ट। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। द थर्ड थिंग इज दैट for children, while you're narrating the story, you have to be very cautious in the kind of sentences that you frame or phrases that you use. They have to be short and simple sentences and very simple words to be used. That's going to be very cautious. दूसरा, बच्चों को समझाने के लिए when we start narration, we can always get into modulate our voice also, which I'll cover when we talk about tone. So for example, अगर मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह अगर करूंगी तो बच्चा बोर हो सकता है। बट अगर सपोज मैं अगर बात करूं हमारे 7 एलिमेंट्स की, जो कि यहाँ सामने भरत है और भरत ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करी है, तो अगर मेरा कैरेक्टर, फर्स्ट एलिमेंट कैरेक्टर जो है वो अगर बूढ़ा है तो बूढ़े की आवाज में बात करना। इफ द कैरेक्टर इज यंग, आई स्पीक इन अ वेरी यंग। और इफ द कैरेक्टर इज विटी, क्लेवर, तो वॉइस में भी वो चेंज आ जाएगा। और अगर वो छोटा बच्चा है, मैं छोटा सा बच्चा हूं, देन यू आल्सो चेंज दैट। तो आप कैरेक्टर में बच्चों को घुसाने के लिए आपको खुद कैरेक्टर की आवाज में भी घुसना पड़ सकता है। दूसरा, टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, हमारे यहाँ पे शुरू में हमारे 2 कैरेक्टर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना, तो बच्चों को के सामने बिल्कुल वो कैरेक्टर भी आना चाहिए। तो जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट मंकी, we can describe the monkey with more adjectives. For example, there was a monkey, a naughty monkey, or a monkey with a long curly tail. तो क्या होगा अगर बच्चा इधर उधर होगा, जैसे हमने टेल बोला, नॉटी बोला, तो कुछ तो उसके दिमाग में आ जाएगा। या जैसे एनिमेटेड मूवीज में होता ना, अगर एक बंदर को दिखा रहे होते हैं वो बंदर, हाउ द मंकी इज हॉपिंग अराउंड, जंपिंग एंड गिगलिंग। तो जब हम वो कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बच्चों के सामने बिल्कुल एक एनिमेटेड मूवी की तरह आ जाना चाहिए कि भैया ये बंदर है, लंबी कर्ली टेल है इसकी और हंस रहा है, बहुत मस्तीखोर है। Similarly, crocodile. For crocodile, again we can use adjectives. Crocodile can be someone who is a big crocodile with a long tail. So, expressing emotions, adding adjectives to your character is very, very important. Moving on to the next element that we need to modify a little for a child. Now, setting. Setting, हमारे यहाँ पे जो स्टोरी थी बंदर और क्रोकोडाइल की, सेटिंग में बच्चों को वहां पे हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे जंगल। सो जंगल में वी कैन टॉक एंड यूज मोर एडजेक्टिव्स लाइक big trees, green leaves, beautiful jungle, a tree full of fruits. And वहां पे because we have to introduce the water also, right? क्योंकि our crocodile is coming out of water, so there was a beautiful river with lot of fishes. मतलब वो जो setting शुरू में है ना, वो जबरदस्त करनी चाहिए, क्योंकि अगर first few seconds में हमने अगर बच्चे को engage नहीं किया,
अगर फर्स्ट फ्यू सेकंड में बच्चा विजुअलाइज नहीं कर रहा है कि एज इफ द बच्चा इज इन दी what you say is is walking in the jungle or is actually watching the tree, जंगल में ही बैठा हुआ है, तो अगर वो विजुअलाइज नहीं करा सके, बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, तो वो आपकी स्टोरी के साथ कनेक्ट तो छोड़िए, एज यू मूव ऑन टू द स्टोरी दे विल नॉट गो अलोंग विद यू इन द स्टोरी. सो हाउ यू पुटिंग the setting is very, very important. So a storyteller needs to be very, very expressive from the start itself. Now coming on to the plot. So I'll try and summarize as quickly as possible. I know we are running behind. Sorry, we overshooted the time. So अगर again plot में भी बहुत सारी चीजें हम colors add कर सकते हैं, adjectives add कर सकते हैं. For example, जो monkey का first communication था crocodile के साथ, तो वहां पे monkey saw the crocodile के बजाय we can say the monkey saw crocodile, and we can say the monkey is talking to the crocodile also. For example, hello crocodile, अरे मगरमच्छ, हाँ मैं बुला रहा हूँ. तो वहां पे ये एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं, एंड अपनी वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है उसको लाउड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सिग्निफाई करने के लिए कि भाई बंदर और जो क्रोकोडाइल है वो दूर है, तो आप अपने जो आप ये चीज बोल रहे हैं उसमें लाउड पिच का इस्तेमाल कर सकते हैं. देन वो दोनों कैसे दोस्त बने, तो वो कॉन्वर्सेशन में भी you can emphasize, they started talking about their family, about their houses, कि भाई emphasize करने के लिए बच्चों के लिए कि कैसे वो बात करते गए, जैसे कि वो भी स्कूल में करते हैं, बच्चे अपनी बात फ्रेंड से बात करते हैं, कि भाई वो सब चीजें जो है क्या करनी चाहिए. फिर एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जब मंकी फर्स्ट टाइम क्रोकोडाइल को देख रहा है, तो he can be inquisitive कि अरे भाई ये कहाँ से आ गया, कभी पहले नहीं दिखा. वो वॉइस के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू कर सकते हैं. ओके, भरत ने चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि भाई यहाँ पेस इंपॉर्टेंट है. तो कभी कभार क्या होता है, हमको जल्दी होती है अपनी चीज खत्म करने के लिए, कि बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए. तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे वो पेस में नहीं है, तो मॉडरेट पेस ही रखिए, ताकि it can help you. Okay? And प्लॉट में एक और चीज कि टूवर्ड्स एंड आप अपना एंड में आप अपना स्टोरी कैसे रखना चाहते हैं. एंग्री, आप एंगर पे छोड़ना चाहते हैं कि भाई बंदर गुस्सा हो गया, या ह्यूमर करते हुए कि भाई हंस रहा है, अरे तुम पागल हो क्या, द बंदर इज लाफिंग एट द क्रोकोडाइल, अरे पागल हो क्या, कोई छोड़ के आता है क्या. तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टोरी, कॉन्फ्लिक्ट. अब भाई कॉन्फ्लिक्ट कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, पहला कॉन्फ्लिक्ट जब अकर हो रहा है बिटवीन द क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ, तो क्रोकोडाइल को जब पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है उसके फ्रेंड का हार्ट खाना चाहती है, देन द क्रोकोडाइल कैन ट्राई एंड कन्विंस द वाइफ. तो उस पे हम ज्यादा एग्जैजरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, monkey's heart, the crocodile talking to his wife, monkey's heart, I don't think it's going to be sweet, I will get you more jumps. तो हम जब ये चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक तो हम इलैबोरेट कर रहे हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को कि भैया क्रोकोडाइल कन्विंस कर रहा है अपनी वाइफ को कैसे बंदर से जामुन की तरफ ध्यान हटाते हुए. दूसरी चीज, अभी वाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है, शी इज वेरी एडमेंट. अभी हमने जब when I shared it with you, I did mention that the wife is saying that she must be मतलब a lady crocodile. भाई तुम्हारा चक्कर चल रहा है उसके साथ. बच्चों को हम हमेशा इतना ज्यादा नहीं बताते, मतलब we try and avoid such things. So over there we can always say that the wife said, if you care for me, get me the monkey's heart. तो भाई उसने तो इल्जाम लगाए हैं, वो हमने बताए नहीं. एट द सेम टाइम वाइफ जो एडमेंट है
वो हमने कंटिन्यू किया है। एंड दूसरा चीज ये कि जब when the crocodile is expressing, is breaking the news to the monkey, that is also a conflict. So how is the monkey handling the situation? He's talking in a very joyful tone. Okay, how is the monkey handling the conflict? Is in a very joyful tone. Oh, you want my heart? You should have shared with me before. So जब हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को अगर हमें सिखाना है कि भाई लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, आप घबरा के बोलोगे या उसको कैसे ट्वीट कर सकते हो, ये भी हम पोर्ट्रे कर सकते हैं अपनी स्टोरी से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज थीम। अभी थीम तो इट विल बी द सेम ओनली, थोड़ा सा उसमें बस ट्वीक कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, आप उसमें जैसे भरत ने बोला रस थोड़ा और ऐड कर सकते हैं बच्चों के लिए। व्हेन यू आर टॉकिंग, भाई उनके फ्रेंडशिप के बारे में और चीजें बता करके कि भाई मंकी फेल्ट बिट्रेयल एक्सप्रेस करके। एक चीज इंपॉर्टेंट होती है थीम में कि बच्चों को कोई चीज ना, अगर हम स्टोरी में उनकी रियल लाइफ से एसोसिएट करा सके तो वो अच्छा होता है। अगर मैं यही कहानी की बात बताऊं तो इसमें हमने जामुन की बात करी थी, भाई ये सब कॉन्फ्लिक्ट तो जामुन की वजह से हुआ। नाउ जामुन एज अ फ्रूट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्यादा बच्चों को पता नहीं होगा या मोस्ट ऑफ देम वुड नॉट एंजॉय दैट फ्रूट जामुन। तो अगर हमने एक्सप्रेस करना है कि भैया जामुन तो बहुत मीठी चीज है, तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं दैट जामुन इज एज स्वीट एज a gulab jamun. Jamun is as sweet as a gulab jamun. I like gulab jamun. Do you also love gulab jamuns? तो जब आप ये एक्सप्रेशंस के साथ बच्चों को अगर शेयर करेंगे तो ऐसा पावर होना चाहिए आपकी नरेशन में कि बच्चे के दिमाग में ही नहीं गुलाब जामुन, उसके मुंह में भी गुलाब जामुन का टेस्ट आ जाए और उसको लगे कि भैया ये बंद होए और मैं जरा जाके बोलूं कि मुझे तो भैया गुलाब जामुन आज मम्मी खाने पे खिला दो, आप मुझे आज गुलाब जामुन खाना है। तो वो स्वीटनेस माउथ में फील होनी चाहिए, वो एपेटाइट अंदर से गुलाब जामुन का आना चाहिए अगर बच्चे का स्वीट। सो दैट इज अबाउट कोरिलेटिंग सर्टेन थिंग्स दैट दे कैन एसोसिएट विद। फिर दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बच्चों के साथ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जनरली फर्स्ट ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसमें हम एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस डाल सकते हैं और जैसे मैंने बताया कैरेक्टर का वॉइस भी इनवाइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में अगर हम स्टोरी बताएं तो काफी बच्चों को मजा आता है और जनरली हम डायरेक्ट स्पीच इज यूज्ड। सो फर्स्ट थिंग recommended is first person. You can change it if you want, but using direct speech is very important. Again, stating that use small and simple sentences. Coming on, if we have to express our point of view, saying कि भैया आपको एक स्ट्रेस सिचुएशन में काम होना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लली अगर एक छोटा बच्चा है उसको क्या बोले कि भाई कामनेस क्या होती है, तो उसको कैसे एक स्ट्रेस सिचुएशन का एग्जांपल दे। फॉर एग्जांपल, what if you're there in your class and the teacher says surprise test today, or you have missed your bus? Stress. और क्या स्ट्रेस होता है बच्चों के लिए? You forgotten to complete your homework. तो आपने एक स्ट्रेस उत्पन्न किया जो उनके करंट सिचुएशन स्कूल से कोरिलेट हो गया और अब कामनेस पे कैसे जाएंगे? That you think भैया अगर टीचर ने एकदम से बोल दिया कि होमवर्क दिखाओ और मैंने किया नहीं है, एक चीज है कि मैं रोने लग जाऊं, मैं घबरा जाऊं, या दूसरी चीज है आई टेक अ डीप ब्रेथ, वॉक अप टू माय टीचर विद कॉन्फिडेंस एंड आई टेल हर, सॉरी टीचर, आई हैव नॉट डन माय वर्क, कैन यू गिव मी वन मोर डे, आई विल कंप्लीट इट एंड शेयर इट विद यू। तो बच्चों को वो कामनेस कैसे होती है वो एक एग्जाम्पल से भी फील करा सकते हैं। Now moving on to the last thing which is tone. Tone तो भाई बहुत ही पावरफुल है और ये सेम चीज तो भरत ने भी कन्वे करी। आपका जो नरेशन है स्टोरी में
For adults, the expressions are there, but they are more controlled. बच्चों के लिए वो expressions जो है वो बहुत जरूरी है. Energy has to be more. भैया बच्चे इतने energetic है, अगर आप उनको एक dull tone में बोलेंगे, they will get disengaged like this. Very importantly, expressions and intonation. भैया जो voice है हमारी ऐसे नहीं जा सकती है, intonation बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसा होना चाहिए. बट एक चीज है जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए एक इंटोनेशन एक्सप्रेशन में, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट चिल्ड्रन of let's say around 7 or less, they would need more of expressions, maybe some props like a puppet. लेकिन अगर हम वो ही expressions, extra expressions, intonation या props अगर एक बड़े बच्चे के लिए जो इवन 11 से 12 साल का कोई बच्चा है, if we use the same thing, that child will get disengaged. An elder one probably would be curious to know what's going to happen next. And if you are stretching too much on that situation or an expression, the child will say, "बोर्ड ये क्या बोल रहे हैं?" Disconnect हो गया, इधर उधर देखना शुरू हो गया. So आप sorry, आप कौन से एज ग्रुप को कैटर कर रहे हैं उसके हिसाब से एक्सप्रेशंस और इंटोनेशन यूज करें. एक और एग्जांपल, जब मंकी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, आई एम रक्तमुखा, that could be a normal tone when you are explaining or introducing the monkey's conversation to an 11-year-old child. मगर जब आप एक छोटे बच्चे को बोल रहे हैं तो आप वर्ड रक्तमुखा पे बहुत स्ट्रेस दे सकते हैं. आई एम रक्तमुखा, मतलब रक्तमुखा पे भी स्ट्रेस डालेंगे छोटे बच्चे के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बड़े बच्चे के लिए स्ट्रेस नहीं करिए, ये इम्पोर्टेंट. एंड काफी सारी चीजें हैं दैट यू कैन ऐड इन योर टोन. और सबसे पहली चीज है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दैट टूवर्ड्स योर एंड, आप अपना एंड जो है स्टोरी का वही था कि मंकी अपने घर आ गया, क्रोकोडाइल घर पे चले गया, बट यू कैन एंड दैट इन एन एंग्री टोन. बट बच्चों को एंगर इतना पसंद नहीं है, उनके लिए ह्यूमर टोन में अगर आप ये छोड़े स्टोरी तो बहुत है. Sorry guys, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, but that was about certain things about narration of stories. But trust me, हमारे लाइफ के जो बेस्ट नरेटर्स थे वो हमारी मम्मी एंड दादी. और जैसे मैंने बताया कि ये तो मेरी फेवरेट स्टोरी थी. बचपन में मुझे स्टोरी सुनने का शौक बहुत था और अब मुझे पैशन है स्टोरी सुनाने का. Can we go on to the next slide, please? So as we have already spoken that the story has the power to transform a child because they're so powerful, it can change the way that the child is thinking and everything. So but हमारे यहाँ पे जो stories होनी चाहिए वो बिल्कुल right kind of stories. अब आप बोले right kind of stories क्या होती है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे भारत देश में इतनी पावरफुल चीजें हैं, इतनी पावरफुल स्टोरीज जो कि भरी भी है नॉलेज से. भरत ने कैसे भीम का एग्जाम्पल दिया, और जो मैंने पंचतंत्र बताई थी, बाय द वे आप में से कितने लोगों को पता है नहीं पता, बट पंचतंत्र जो है वो एक आचार्य विष्णु शर्मा है जिन्होंने 3 लड़कों प्रिंस को, जिनको पढ़ाई में कोई मन नहीं था, उनको नीति शास्त्र पढ़ाने के लिए ये पंचतंत्र रची थी. तो सोचिए इतनी पावरफुल होती है हमारी स्टोरी, किस सोच से बनी होती है हमारी स्टोरी. तो जब हम अपने when I went through the learning of Indian wisdom through LPSG and चिरंजीव गुरुकुल, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि भाई ये चीज जो है मैं इस एज में सीख रही हूँ, बच्चों के लिए क्या. तब हमारे को एक सीजी हमारे मेंबर है जिनका नाम श्रीजित है, उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, गीतांजलि क्यों नहीं तुम एक सेशन क्रिएट करती जहां बच्चों को तुम स्टोरी शेयर करो और वो रिफ्लेक्ट करें. बहुत ही पावरफुल था. तो मैं श्रीजित की बिल्कुल थैंकफुल हूँ, उन्होंने आइडिया दिया और उस दिन हमने एक इनिशिएटिव प्लान किया जिसका नाम है कथाशाला. कथाशाला ट्रांसफॉर्मिंग चिल्ड्रंस लाइफ यूजिंग द पावर ऑफ भारतीय शास्त्र. आप बोलोगे भाई शास्त्र तो रिलीजन है, नहीं, शास्त्र को यूज करना चाहिए एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ नॉलेज.
एंड उसकी पावर को कैसे, उस नॉलेज को कैसे बच्चों तक लेके जाए, so that the child can transform the way he thinks and starts implementing it in the day to day life. तो आप बोलोगे भाई कथाशाला में क्या अलग है? ठीक है, आपने रामायण सुना दी, आपने कुछ और शास्त्र बता दिए, पंचतंत्र सुना दिया, तो कथाशाला इतना स्पेशल क्यों है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कथाशाला की ये है कि जब हम उनको स्टोरी सुनाते हैं, मे बी वो हमारे शास्त्र से हो, वी डोंट टेल देम कि भाई pray to God or have that fear in yourself, don't do wrong things because of fear of God. नहीं, हम ये चीज उनको नहीं बताते हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई नॉलेज कैसे यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस 5 मिनट ज्यादा नहीं लूंगी, अगर हम बोलते हैं धर्म, अगर हम बच्चे को धर्म कॉन्सेप्ट बता रहे हैं थ्योरी के, स्टोरी के थ्रू, तो धर्म it is always misinterpreted as religion. No, dharma is your responsibility, your role. तो तब हम बच्चे को रिफ्लेक्ट करा के पूछते हैं कि भाई तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट क्या है? तो बच्चा खुद से सोच के हमें बताएगा कि भाई मेरा धर्म है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, टीचर की सुनूं, भाई स्कूल गंदा ना करूं, वो भी धर्म है स्टूडेंट। अच्छा, आपका धर्म क्या है बच्चे? आपका घर पे, भाई घर पे मम्मी पापा की मदद करना, अपना घर साफ रखना। तो कैसे हमें कॉन्सेप्ट, हमने एक स्टोरी बताई, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो बच्चे से बुलवाया कि भाई आपको समझ आए तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कर। वी आर नॉट डिक्टेटिंग, वी आर इग्नाइटिंग हिज थॉट्स। दूसरी चीज, हम उनको कुछ साइंस बिहाइंड सर्टेन ट्रेडिशंस के बारे में भी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नमस्ते, अभी नमस्ते अगर हम बोले तो कैसा होता है कि भाई हाथ जोड़ा, और जनरली बोलते हैं कि हिंदूज करते हैं वो चीज, बट जब हम नमस्ते एक्सप्लेन करते हैं अपने बच्चों को अपने कथाशाला में, तो हम उनको कथा नमस्ते का मीनिंग बताते हैं, उनको ये बताते हैं कि भाई जब आप प्रॉपर तरीके से नमस्ते करते हो, बोलना नमस्ते नहीं होता है, हाथ जोड़ करके प्रॉपर वे में नमस्ते करना होता है, और उसका फायदा ये होता है कि इक्विलिब्रियम बढ़ जाता है आपके ब्रेन में, कि भाई उससे आपका ब्रेन भी एक्टिवेट होता है। और तभी हमारे भारत में जब शिष्य गुरु से पढ़ता था तो उससे पहले उसे प्रणाम करता था। क्यों? क्योंकि वो उसका ब्रेन एक्टिव करता है। कैसे? क्योंकि जब हम यहाँ पर अपने हाथ जोड़ रहे हैं, फिंगर्स टच कर रहे हैं, तो वो हमारा ब्रेन एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए नमस्ते इंपॉर्टेंट है। और उसको आज से हम को रिलेट कर सकते हैं कि भाई कोविड में क्या हुआ, हैंडशेक से जर्म्स होते हैं स्प्रेड, लेकिन हमारे नमस्ते से आप सेफ हैं, आप ग्रीड भी कर रहे हैं, सेफ भी है। सो दैट्स अबाउट कथाशाला, जो मैंने आपसे बात करी, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू अबाउट कथाशाला दिवस। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? जी हाँ, कथाशाला एक दिवस है, एक उत्सव है, एक इवेंट है, जहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टोरी टेलर्स हैं जिनका पैशन है बच्चों को भारत के बारे में, भारतीय शास्त्रों के बारे में, उनका विजडम स्टोरीज के थ्रू वो शेयर करना चाहते हैं। We have over 20 volunteers who will be doing Kathashala Divas by sharing stories with children either online or offline on 29th and 30th of April, which is the last weekend of this month. तो अगर आप में भी ये पैशन है, यू कैन कनेक्ट विद अस, मेरा डिटेल्स दिया जाएगा, आपको वॉलंटियर करना, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को ये सेशन कराना चाहते, ओ बाय द वे, ये सिर्फ सेशन बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ भी हमारे सेशन को अटेंड कर सकते हैं। 2 डेट से 29, 30 आप हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको स्केड्यूल दिखेगा, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो शेयर कर सकते हैं। सॉरी, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 5 मिनट के ऊपर हो गया। एक आखिरी चीज, हमारे सारे स्टोरी टेलर्स हैं जिनका हमने पिक्चर्स हमारे आपके पास लेके आए हैं। जो कथाशाला है, बाय द वे, हम सब जो लोग चिरंजीव गुरुकुल से कनेक्टेड है या LPSG से कनेक्टेड है, वो एक्चुअली एक पर्सन के थ्रू, जिनका नाम है राजेश कामत, जिनकी आपने एक्चुअली एक वीडियो देखी।
ना राजेश को हम अपना गुरु ऑफ अर्थशास्त्र बोलते हैं एंड इनसे हम काफी लोगों ने ये चीज सीखी है कि कैसे नॉलेज को, जो हमारे शास्त्रों की नॉलेज को हम अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा वीडियो, राजेश का मैसेज हमारे कथाशाला दिवस पे, ये आखिरी चीज आप सबके लिए। So may I please request if you can share that video? Yeah, thank you. Namaste, everyone. I hope you had a wonderful time with the session today. I want to tell you that Kathashala Divas is not a one-time thing. Kathashala Divas is intended to be an annual event every year. Not only that, Kathashala Divas should be happening across the country several times a year, though it may not always be on a large celebrated scale, but it's an important event. Now, why is it so? Katha, Shala are two things we have to institutionalize in this great land of Bharat once again, because it has been very core to our entire Indian tradition. What do I mean by that? Katha has been the way in which princes have been trained to become great kings. Politicians and diplomats in days of yore were trained to become accomplished statesmen, and so on and so forth. Can we bring that bit again? Now that's very important. I want you to know that Katha is a very innocuous way of transferring values very deeply, because Katha has no notion of religion. Stories are universal, they travel across cultures like music and other forms of art without any attribution to a specific faith. And they are great ways of learning, because what stories cultivate and generate in the listeners' minds are phenomenal. Stories can be remembered for life, and the emotions that they evoke the first time can be remembered forever. You may forget the person, but you will not forget the story. You will remember the emotions that it evoked in the story, and the story can evoke those emotions again and again every time you remember them through your life. So come, let's together recreate, establish, institutionalize the entire tradition of Katha, and with it Katha Shala once again. Dhanyavad and Namaste. Thank you so much for your valuable time. I would now like to hand it over back to Aditi. Thank you so much, Bharat and Gitanjali, and all the participants. I know we have gone over the time, but I think we were just glued to our screens listening to y'all, and I hope everyone has taken copious notes, because there is so much to learn from both of them. And as Gitanjali shared, and we've also put it on the chat, we would definitely be really keen to get more volunteers in who are passionate about storytelling to participate in Kathashala Divas. Of course, if you're also keen to engage your children or children that you know in Kathashala Divas, we would be very happy to have you. You can reach out to anybody from the Chiranjeev Gurukul community who shared today's invite with you. And if anybody wants to unmute, share their comments, I would welcome you to do so before we close today's session. Okay, I think we should close. We've taken enough of everybody's time. So just like we did in the beginning. Was someone saying something? Okay. Okay, so just like we began,
Please take a deep breath and close your eyes. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Namaste again, everyone, and thank you so much for joining us for our 8th Thank you so much. Gurukul Sammelan. Thank you, Aditi. Thank you, everyone. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, and we hope to Thank see you you at the for the next wonderful time. session. Thank you so much. Very inspiring. Thank you so much. आप यहाँ पे क्या कर रही हो?